Good morning, students. In this video, we'll start the new chapter, that is pollution of air. This chapter is included in your upcoming exam. So this chapter is very important chapter. This chapter is generally environment based chapter. So we'll discuss about all the topics within this chapter. We'll solve the exercise portions and so on. And even very important information, I will try to provide the revision videos of combustion followed by the videos of pollution of air. So let us start the discussion. So the chapter is pollution of air. Before starting this, let us discuss about environment. So it is very well known to all of us, that is, we are living beings. We live within our environment. So environment is consist of living and non-living substances or organisms. There are some organisms which have life. They are living organisms like us, man, animals, and also so on. So others. Non-living means there are some objects like pen, book, and all the things which are present around you. So many things, so many non-living organisms or non-living things are there around you. There are so many virus, bacteria around us. Sometimes they are living, sometimes they are not living. Within the human beings, within the body of human beings, the virus, bacteria, these are living, and outside is the virus and not living. Virus is the intermediate portion of living and non-living organisms. So, if we combine this, if this combination of living, non-living, virus, bacteria, and all other things, the air, water, this combination of this, all the things, that is our environment. So, there are so many components of environment. There are so many important components like air, like water. It depends upon environment. It depends upon the components of environment. It depends upon air. Without oxygen we cannot survive. Without water we cannot survive. Soil. Soil is very important for the production of crops. Okay. There are so many things with so many components of environments are there. So we'll discuss about it. Remember, these components are very important. These components are very important for our survival. But the matter is that the air contains different types of gases. Air contains different types of gases, like nitrogen, like oxygen, like carbon dioxide, like hydrogen, and so on. Water also contains this type of substances also, not gases. Water is liquid, it is known. So air, we'll discuss about air in this chapter. Okay? That's why I am not talking about this water, soil, or like this. There are so many components of environments on which it depends. The air contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen, chlorofluorocarbon, and so many things. Now, this components has a limit of their composition. If they cross their limit, they can harm our environment. Suppose that you are present within a room and the room becomes filled by smoke. What will happen? You will not be able to take the breath. You will face a problem, breathing problem. So, if smoke is present within the room in a very less amount, then it is not so much harmful. Not so much harmful. We will be able to take the breath. Means this gases has a limit above which they can harm us. So this limit is called threshold limit value. Threshold limit
value. There is a limit value of these components of air above which they can harm the environment. This limit is called threshold limit value. Remember this one? Threshold limit value. It is known as TLV. तो फुल फॉर्म ऑफ TLV थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू. तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं उनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होते हैं कि इतना परसेंट नाइट्रोजन होगा, इतना परसेंट ऑक्सीजन होगा. इन जनरली एटमॉस्फेयर में मोस्ट ऑफ द गैसेस, जितने भी गैसेस होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन, द मोस्ट कॉम्पोजिशन इट इज ऑफ नाइट्रोजन. 78% के आसपास नाइट्रोजन ही होते हैं और ऑक्सीजन 21% के आसपास ऑक्सीजन है. बाकी बहुत ही कम परसेंटेज में बाकी गैसेस होते हैं. ओके, दिस आर द मेजर गैसेस. तो ये जो गैस होते हैं इनका जो परसेंटेज है, मान लो कि नाइट्रोजन का 78% हो गया, तो 78% तक ये ठीक है. ये अगर 90% हो जाएगा देन इट विल हार्म. ऑक्सीजन 21% ठीक है. अगर ये 10% ऑक्सीजन हो जाएगा देन इट विल हार्म. तो इनका जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली दे कैन हम वो हम लोग के लिए खराब है. If they cross their limit, ठीक है, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना. तो इस कंडीशन में वो लोग हम कर सकते हैं. जिस लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो हम करेंगे, दिस लिमिट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट. तो बात ये है कि अगर एनवायरनमेंट में ऐसा कोई कंपोनेंट्स जो अपना लिमिट वैल्यू को क्रॉस कर गए, then it can harm the environment. Then the situation or the condition of the environment will be known as pollution. Pollution, its meaning is to make dirty. पोल्यूशन होता है तो एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है. तो बच्चों याद रखें कि जब क्या होता है कि एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो वो एनवायरनमेंट को डर्टी कर सकते हैं. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड pollution. Now if I ask you the question that is, what do you know by pollution? तो पोल्यूशन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं. ओके, एंड दे कैन मेक द एनवायरनमेंट डर्टी. दिस कंडीशन इज कॉल्ड पोल्यूशन. अब पोल्यूशन जो करेंगे, दो सब्सटेंसेस which can make our environment dirty, they are called pollutants. तो जो अगर आपको पूछा जाए what do you mean by pollutants, तो आप क्या बोलेंगे? those substances which can make our environment dirty when crossed their limit value are called pollutants. I repeat the definition. Those substances which can make our environment dirty, ऐसा कुछ सब्सटेंस जो हम लोग का एनवायरनमेंट को डर्टी कर देगा, गंदा कर देगा. when they cross their limit value, obviously up to a certain limit they are not harmful, but if they cross their limit then they will be harmful. अब खाना खा रहे हो, एक लिमिट तक आप खाना खा सकते हो. अगर उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके बहुत ज़्यादा खा लिए तो obviously it will not be डाइजेस्ट नहीं होगा, तब प्रॉब्लम होगा. so these substances, those substances which can pollute the environment, अब ये भी लिख सकते हो, those substances which pollute the environment they are called pollutants.
Simply you can write this, or you can write this definition also. Fine. So what do you mean by pollution now? What do you mean by pollution now? When the pollutants cross their limit value, they make the environment dirty. This phenomenon मतलब घटना, phenomenon is called pollution. Very important. When the pollutants they cross their limit value, they make the environment dirty. This phenomenon is called pollution. जब pollutants अपना लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, they can pollute the environment. They are called pollutants. Those substances which can pollute the environment, they are pollutants. When the pollutants cross their limit value, they can make the environment dirty. This phenomenon is called pollution. जो pollution करेगा वो pollutant होगा. Pollution का मीनिंग क्या होता है? To make dirty. Environment क्या होता है? हम लोग के आसपास जो लिविंग नॉन लिविंग वायरस बैक्टीरिया सबको मिला के जो सिचुएशन है हम लोग के, जिसमें हम लोग रहते हैं, लिव करते हैं, हम लोग सरवाइव करते हैं, दैट इज द एनवायरनमेंट. क्लियर हो गया? पोल्यूशन पोल्यूटेंट क्लियर हो गया आपके पास? चलो हम लोग बात करेंगे अब एयर पोल्यूशन के बारे में. अगर स्पेसिफिकली आपको एयर पोल्यूशन पूछा जाए तो आप बोलेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ एयर व्हेन क्रॉस देयर लिमिट वैल्यू दे पोल्यूट द एयर. तो पोल्यूशन, अब जैसे कि एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कर रहे थे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोल रहे थे, यहाँ पे जस्ट क्या करना है, उसमें एनवायरनमेंट की जगह पे एयर कर देना है. ठीक है. सो दोज सब्सटेंसेस व्हिच पोल्यूट एयर दे आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. Those substances which can pollute the air, they are called air pollutants, right? Those substances which pollute air are called air pollutants. When the air pollutants cross their limit value, they can pollute the air. This situation is called air pollution. When the air pollutants cross their limit value, they can make the air dirty. This phenomenon is called air pollution. Okay? So you can write the definition of air pollution, you can write the definition of air pollutants. Let me take some examples of air pollutants. Here the examples of air pollutants means like smoke which emitted from the vehicles, from the factories and so on. You can see the example of pollutants: carbon dioxide which are produced from the burning of fossil fuels, carbon monoxide, CO, it is carbon monoxide, oxides of nitrogen, they can pollute the environment, there is nitrogen dioxide, oxides of sulfur, sulfur dioxide, sulfur trioxide, SO2, SO3 and so on. So this substance is CFC, this one is very important, CFC, chlorofluorocarbon, these are the air pollutants. So these are the examples of air pollutants. तो होपफुली बच्चों आपके पास ये क्लियर हो गया कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एंड एग्जांपल्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. राइट. लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन. हियर दिस वन वी आर राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. Cause of air pollution. So there are two different causes. One is natural
another is man-made. Okay, let me discuss about it. Very important. I am just explaining this. You have to write it by yourself. ठीक है, आप आपके बुक से देख के भी लिख सकते हो, आप अपने से भी लिख सकते हो. I am just explaining this. So natural causes, तो जो natural cause है मतलब जो nature से होता है, like storm, बहुत ज़्यादा तूफान हो गया, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा जोर से, धूल इधर उधर हो जा रहा है ना, जो लिफ है, प्लांट्स का जो लिफ है वो गिर के इधर उधर हो जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, पोल्यूशन होगा. दैट इज नेचुरल फिनोमेना, नेचर से होता है. वोल्केनो, कभी कभी देखा जाता है कि वोल्केनो जो होते हैं कि वो उधर से आग निकल जाता है, लावा निकल जाता है, तो ये जो होते हैं दैट इज एयर पोल्यूशन कॉज बाय नेचर. ये सब नेचुरल पोल्यूशन है. इसमें बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता है, बहुत एक्सटेंट में हार्म नहीं होता है. जैसे कभी कभी देखा जाता है फॉरेस्ट में आग लग जाता है अपने से, ठीक है. तो ये सब जो प्रोसेस हैं दे आर जनरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन दैट इज मैन मेड कॉज. ये सबसे ज़्यादा खतरनाक, लाइक व्हीकल्स विच वी आर यूजिंग हियर, it produce smoke, they can pollute the air. Number 2, factories. The factories, they produce harmful gases. These gases when they are emitted, they evolved or they are emitted to the environment, they can pollute the environment. बहुत खतरनाक होता है ये सब. Okay. Third, you can write there is burning of fossil fuels. Burning of fossil fuels, like coal, petroleum. We are burning this coal, petroleum. They produce a huge amount of smoke, so they can they can pollute the environment. Okay, using more AC, refrigerator, okay, refrigerator which produce CFC, chlorofluorocarbon. So these substances are the air pollutants. There are so many causes of air pollution by man. तो हम लोग ही ज़्यादा एयर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है. Deforestation, that is a very important reason. Deforestation वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी हार्मफुल, बहुत खराब एक स्थिति है कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, है ना. ट्रीज को काट डालना ये बहुत ही खराब एक प्रैक्टिस है. डिफॉरेस्टेशन इट कॉजेस एयर पोल्यूशन, ठीक है. फॉरेस्ट इज द प्यूरिफायर ऑफ एयर, नेचुरल प्यूरिफायर. ओके, एयर को नेचुरली प्यूरिफाई करते हैं फॉरेस्ट, बट हम लोग फॉरेस्ट को काट डालते हैं. इट हार्म आवर एनवायरनमेंट. So in this class we discussed about environment, we discussed about pollution, we discussed about environmental pollution, we discussed about environmental pollutants, we discussed about air pollution, air pollutants, we discussed about the causes of pollution, two types of causes, natural causes and man-made causes. I think you can write this causes and you can explain it by yourself. आप इसको खुद से लिखने का कोशिश करें. If you face any problem, then obviously inform me. In the next class, we'll discuss about the production of different harmful gases, different air pollutants कैसे बनते हैं. We also discuss about their harmful effects and the other topics. तो बच्चों इतना तक आप लोग अच्छे से लर्न करके आए. नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा. लर्न अप टू दिस. थैंक यू.